students, now we will solve the question number 29 which was asked in the 2024. Following questions are case based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow. एक पैराग्राफ दे रखा है, one paragraph is given. Based on this paragraph you have to give the answer of the questions which are asked below. So this is the paragraph, hope you will able to read it. Now see, in the most of the paragraph does not contain the answers. So here what you have to do, you have to read the paragraph or not read the paragraph, it does not mean. Basically you have to give the answer. So these are the questions which are asked. So let's see the solution one by one. We will see the answer of the first A part question, that is the predict whether COF6 3- a diamagnetic or paramagnetic and why. Atomic number 27 is given, that of the cobalt. Let's see the answer. Let's see the answer of the question number 29. This is the first part, A. Now see, COF6 3- ion. This is the compound in given in the question. Now we have to write the EC of cobalt Z equal to 27. It is given in the question. Atomic number 27 is given. So it will be the 3d7 4s2. The EC will be the 3d7 4s2 of cobalt. Now here we have to find out the oxidation state of the cobalt. Cobalt is exist in the +3 oxidation state. You can find it. So EC of CO3+ आयन, हमें 3+ आयन क्यों निकालना है? क्योंकि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 3+ आएगा. ये निकाल सकते हो आप. इसको x ले लो, इसको 6 है -1 इक्वल टू -3. सो बाय सॉल्विंग यू विल गेट दैट x इक्वल टू +3. मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट इज +3. सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन. नाउ what we have to do? Now we have to write the EC of the CO3+ ion. CO3+ ion means that 2 electron from the s orbital will be lost and 1 electron from the d orbital will lost. So total 3 electrons will be lost. 2 s orbital से लॉस होंगे, 1 d ऑर्बिटल से होगा. तो EC क्या हो जाएगी? 3d6. Now we have to write the hybridization. We will see the CO3+ ion. So there the 1 d orbital is given. 1 2 3 4. So 1 2 3 4 5 6. This is the d orbital. Then orbital, after s orbital will be there, then p orbital will be there. Next again d orbital will be there. 1 2 3 4 5. So here actually the फ्लोरीन इज द वीक फील्ड लिगेंड. सो पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस. फ्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी. तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपली एक यहाँ पर आपका फ्लोरीन अटैच हो जाएगा. अनदर फ्लोरीन विल बी अटैच हियर, अनदर फ्लोरीन विल अटैच हियर, अनदर फ्लोरीन विल अटैच हियर. टोटल 6 फ्लोरीन आर विल, 1 फ्लोरीन in S, 3 फ्लोरीन in the F, and this is the S, this is the S orbital, this is the P, this is the D. So another remaining will be in the D orbital. So during the hybridization, 1 S orbital is involved. This is the S orbital, this is the P, and this is the D. So hybridization will be there. Hybridization is sp3d2 and geometry will be equal to octahedral. Geometry will be octahedral. अब क्वेश्चन में, in the question it is asked, it is paramagnetic or diamagnetic. ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? देयर आर द 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड. तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. आंसर क्या है? पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? 4 इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई इट इज द पैरामैग्नेटिक. ओके, लेट्स सी द आंसर ऑफ बी. यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस आयन. आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर
ऑफ CO। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कितना होगा इसमें? तो बेसिकली यहाँ पर क्या EN इथाइलिन डाइअमाइन है, तो इसमें डाइडेंडेंट लिगेंड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने लिगेंड आपके इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये क्या होती है, सेकेंडरी लिंकेजेस होती हैं। तो यहाँ पर लेकिन एक इथाइलिन डाइअमाइन है, दूसरा क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और 2 इथाइलिन डाइअमाइन है। लेकिन इथाइलिन डाइअमाइन जो है डाइडेंडेंट आयन होता है, मतलब एक इथाइलिन अमाइन क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जितने नंबर आप बॉन्ड बनाएंगे वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इथाइलिन डाइअमाइन 2 बॉन्ड, एक इथाइलिन डाइअमाइन 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक इथाइलिन डाइअमाइन 2 बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ इथाइलिन डाइअमाइन कितने हैं, 2, तो 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पर एक क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल से, तो यहाँ पर 1 इंटू, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितनी है, 2। सो टोटल नंबर ऑफ द coordination number will be the coordination number equal to 6. This is the answer. Now, question number 2, B part again we solve. Now we are going to solve the C part. C part, there are the 2 parts are given in the C. One is the write IPAC name of the given complex. जो भी complex दे रखा है इसका क्या लिखना है, IPAC name लिखना है. Then second part, explain CONH3 whole 6 3 plus ion is an inner orbital or outer orbital. Let's see. Now we will see the answer of the C part, that is the first part of the C, that is the write the IPAC name of PT NH3 whole twice Cl2 plus ion. So before writing the name we should know this is the cationic or anionic or neutral complex. अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक किस टाइप का चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स। इट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या ऐसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नाउ इन द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द मेटल as it is. Platinum है तो it will be written only platinum. Now for writing the IPAC name we have to find out the oxidation state of the platinum. See, PT NH3 whole twice Cl2 plus ion. Let's see, X are the 2 NH3 are there, so 1 0 plus 2 chlorine are there, 1 minus 1, total charge equal to plus 1. So X equal to, there will be plus 3. The charge will be plus 3. Now we got the oxidation state of platinum equal to plus 3. Now we will write. You have to write the ligand in the alphabetical order first. So there are the diamine and chloride. So amine will come first, then chloride according to alphabetical order. So diamine, IPAC, diamine, dichlorido, diamine dichlorido, platinum third आयन, प्लेटिनम थर्ड क्या, मेटल का नाम है प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों लिखा गया, बिकॉज दिस द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाता है। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयन आएगा। आयन क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, ये आयन है, तो इसलिए आयन लिखा जाएगा। सो दिस इज द नेम। नाउ वी विल सॉल्व द सी सेकेंड पार्ट, दैट इज द CONH3 whole 6 3 positive. You have to give the answer, this is the inner orbital complex or outer orbital complex. So let's see, the oxidation state of this one, X plus 6 0 equal to plus 3. So cobalt exists here in the plus 3 oxidation state. It exists in the plus 3 oxidation state. So EC of cobalt 4s2 3d7. Now EC of
CO3 plus ion. Why CO3 plus ion? Because it is used in this compound plus 3 oxidation state. So 2 electron from the 3 electron total loss, 2 electron will loss from the s orbital and 1 electron from the d orbital. So EC will be the 3d6. Now as we know that NS3 is the, since NS3 is a strong field ligand, strong field ligand, so pairing of the electron will take place, so it will pair up the electron. So here see the hybridization, that is the CO3 plus ion, that is the DSSP. Now here see, there are the 6 electron will be filled here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But here what will happen actually, here pairing of the electron will take place. What will happen there? Here pairing of the electron will take place, means that CO3 plus ion, see, one, two, 3, 4, 5, 6. Why pairing of the electron will take place? Because NS3 is the strong field ligand. So SDSP. So here one NS3 will go in this, another NS3 will go in this, another NS3 will go in this, and two NS3 will go in the d orbital and one is the s and 3 in the s. Total hybridization will be there equal to D2sp3, and geometry it will be the octahedral. Since here inner d orbital is being used, during the hybridization, so it will be the inner orbital complex. यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर वाला इनसाइड वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसलिए इनर होगा. बाहर वाला डी ऑर्बिटल क्या है, ये अभी क्या है, वेकेंट है. दिस इज द वेकेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडेशन में. अंदर वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए क्या होगा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. या सिंपली कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, और पार्ट ऑफ द question number 29, this is the 29 question, and our part is given, that is the simply using the valence bond theory deduce the safe hybridization of the NiNS3 whole 6 3 positive whole 6 2 positive ion. So let's see the answer of the or part of the C, that is the using the valence bond theory deduce the safe and hybridization of NiNS3 whole 6 2 positive. Let's see here, NiNS3 whole 6 2 positive ion. Now see, nickel has the EC of nickel, it will be the atomic number is Z equal to 28, so EC will be there 4s2 3d8, but EC of Ni2 plus ion we have to write. Why? Because here the oxidation state of the nickel will be there, x plus 6 0 equal to plus 2. So here oxidation state will be the plus 2. Nickel exists in the plus 2 oxidation state. So we have to find out that there 2 electron will be lost from the s orbital. It will again 3d8. Now hybridization Ni2 plus ion
You have to write. They are the d orbital. 1, 2, 3. Now this is the 3d orbital, s, p, again d, outer d orbital, this is the inner. Here 8 electrons are present in the d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But what happened actually here, pairing of electron will take place because ammonia is the strong field ligand. So here in Ni 2 plus ion, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Like this the electron will be paired up. One, two, three, four, and 1, 5. This is the d orbital. This is the 3d, 4s. So 5s it will be there, s orbital, p orbital, and d orbital. This is the inner d orbital. This is the outer d orbital. Actually, we'll see that is the here this orbital remain vacant, but it will participate in the bond formation. ये vacant रहेगा, but bond formation participate करेगा, hybridization process में सॉरी करेगा. अब यहाँ पर क्या होगा? One ammonia will be here, NH3, another ammonia, NH3, 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 and 2 ammonia will be here. NH3. So in the hybridization process, there the hybridization what will be there will be, that is the 1s orbital, p3, 1s orbital, 3 orbital from the p, and 2 orbital from the d are participated. Here outer d orbital is participated, that's why the hybridization will be the sp3d2, and geometry will be or shape octahedral. Octahedral. So this will be the hybridization. You will see the answer because this is a little bit contradictory. Here you will see the strong, due to strong field ligand nature of the NH3, 1d orbital is vacant, but this will not participate in the bond formation. If it is going, because geometry is the sp3 hybrid, the geometry is the octahedral, means that shape is the hybrid, shape or geometry. This is the shape and geometry both. This is the octahedral. But if it is going to participate in the this d orbital, so hybridization will be the d, s, p3, d. So this kind of the hybridization will not exist. So this will be the, actually this d orbital will remain vacant, but the hybridization process will proceed. So the hybridization will be sp3d2, geometry will be the octahedral. Thank you. Hope you got the concept.